Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Syllabus Layers. In this video, I'll be covering all the UGC NET PYQs for the topic Political Institutions in India. In this first video, I'll be covering questions related to making of the Indian constitutions. This is part 1 of the video. Okay? So, first of all, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट बिफोर द अराइवल ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी एज अ मूवमेंट रिप्रेजेंटिंग द क्लासेस एज अपोज्ड टू द मासेस मतलब क्लास बेस्ड मूवमेंट किसने बोला था एज अपोज्ड टू अ मास बेस्ड मूवमेंट सो द आंसर इज रविंद्र कुमार ठीक है it was only after Gandhi ji had come up that it became a mass based movement ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2014 का है द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया वो स्टार्टेड टू शो सॉलिडारिटी विद द सुल्तान ऑफ विच कंट्री सो हमें पता है दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन द आंसर इज ऑटोमैन का जो कैलिफ थे ना कैलिफेट ऑफ ऑटोमैन मतलब टर्की के जो कैलिफ थे उनके लिए द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ठीक है सो द आंसर विल बी टर्की सेकंड ऑप्शन थर्ड क्या है दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स सो द आंसर फॉर दिस इज मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 ठीक है उसमें द the system of diarchy was brought in wherein the subjects were divided into transferred subjects which were to be made by the मतलब उन पे ministers would make the laws or policies and the reserved subjects in which the governor would make the policies or the laws ठीक है नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है वी हैव टू मैच द एजेंसीज और द एक्ट्स विद देयर रिस्पेक्टिव ईयर्स ऑफ origin ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1963 में the CBI had come up Central Bureau of Investigation it had come up in 1963 then we have All India Conduct Civil Services Conduct Rules है ना तो वो हुआ था 1954 का है ये ठीक है देन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट वाज इन 1941 ठीक है देन इंडियन पीनल कोड 1860 का है ठीक है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी द सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2015 का है अगेन दिस इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन वी हैव टू मैच द एक्ट्स विद द रिस्पेक्टिव जो उनका जिस्ट है ना एक्ट का वो उससे वी हैव टू मैच देम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इसमें क्या हुआ था द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड ठीक है तो 1813 का वही हुआ था एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड इन चाइना ऑल ऑफ द मोनोपोली वाज एंडेड ठीक है तो ये ए का क्या रहेगा टू रहेगा आंसर आई राइट इट ओवर हियर ए का टू रहेगा देन नेक्स्ट क्या है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसमें जाके दी देयर वाज अ कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ द मोनोपोली 1813 में टी और ट्रेड विद चाइना वाज left under East India Company, whereas in 1833 there was a complete abolition of the monopoly of East India Company. ठीक है तो बी का रहेगा थर्ड ऑप्शन सी क्या है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैड लेड टू द फॉर्मेशन द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ठीक है सो सी का फोर रहेगा और डी क्या है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 सो 1909 में द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज बॉट इन ठीक है तो मुस्लिम्स वर गिवन अ सेपरेट इलेक्टोरेट इन 1909 इटसेल्फ ठीक है सो द आंसर ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन सो दिस इज द आंसर नेक्स्ट है who presided over the all party conference of 1928 so the answer for this is Muhammad Ali Ansari ठीक है he was the person who had presided the all party conference
इसी वाले कॉन्फ्रेंस में ये याद रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुई थी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू हैड सबमिटेड द नेहरू रिपोर्ट इन दिस कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 2016 का क्वेश्चन है, वी हैव टू मैच द फॉलोइंग, सो वी हैव टू मैच द एक्ट्स विद द रिस्पेक्टिव, क्या मतलब जिस्ट क्या है उस एक्ट का, उससे वी हैव टू मैच देम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें क्या हुआ था, इंपीरियल कंट्रोल बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज एक्सटेंडेड, ठीक है, एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बैनिश्ड, ठीक है, उसको हटा दिया था। सो ए का रहेगा 2। देन बी है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, so non-official members in the executive council were introduced under the Indian Council Act of 1861, इसमें 3 इंडियंस को भी ऐड किया था, ठीक है। तो सो बी का 3rd रहेगा। देन सी क्या है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, इसमें सेपरेट रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम वाज ब्रॉट इन, सो सी का 4 रहेगा। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसके लिए bicameral legislature was, the concept of bicameral legislature was brought in by the Government of India Act 1919. Next, regarding the interim government of 1946, which of the following is not correct? So, Jawaharlal Nehru was the Prime Minister or the head of the council. तो देखिए हमें नॉट करेक्ट बताना है, सो दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज Jawaharlal Nehru was not the Prime Minister but rather he was the Vice President of the Executive Council, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट थे ये इंटरिम गवर्नमेंट में। Jawaharlal Nehru was designated as the Vice President, this is correct, of the Viceroy's Executive Council. The Viceroy continued to be the head of the Executive Council, this is also correct. Members of the interim government were members of the Viceroy's Executive Council, this is also again correct, ठीक है। नेक्स्ट है नवंबर 2017 का क्वेश्चन है, वी हैव टू पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सो आई विल जस्ट गिव यू द टाइमलाइन डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन अर्ली 1920s, ठीक है, एंड नेहरू रिपोर्ट वाज ब्रॉट इन 1928, कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन ऑगस्ट 1932, the Pune Pact came into being in September 1932, and the third roundtable conference took place in November 1932, ठीक है। So next question, which of the following parties or groups the cabinet mission did not recognize? So the cabinet mission had recognized the Muslim League, the Congress as well as the princes, however they did not recognize the Sikhs because Sikhs were a, they were a sizable छोटा minority था, ठीक है, वो not like Muslim League, Muslims का तो major अच्छा, there was a lot of population who were the Muslims, so they had a sizable minority, they were a sizable minority, whereas Sikhs का there was a very small amount of population under them. Next है December 2018, if A.O. Hume and other English liberals hoped to use Congress as a safety valve, the Congress leaders who hoped to use Hume as a lightning conductor. So this was said by Bipin Chandra, ठीक है, बिपिन चंद्र की बुक में this has been mentioned. तो इसका मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का, जो इंग्लिश लिबरल्स है ना, दे हैड होप्ड टू यूज़ कांग्रेस एज अ सेफ्टी वॉल्व, मतलब सेफ्टी वॉल्व क्या रहता है, जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है, ठीक है। सो इन केस देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन द प्रेशर कुकर, द सेफ्टी वॉल्व ओपन्स एंड इट लेट्स आउट द प्रेशर, ठीक है, तो उससे प्रेशर कम हो जाता है एंड इट रिमेन्स स्टेबल। However, if there is no safety valve in a pressure cooker, then if the pressure increases तो पूरा प्रेशर कुकर विल बर्स्ट, ठीक है। सो सिमिलर कंसेप्ट उन्होंने इंडिया पे लगाया था कि इंडिया में जो इंटरनल डिसरेस्ट है, अनरेस्ट है, इंटरनल अनरेस्ट है,
वो प्रेशर कुकर जैसा है. सो दे प्रोवाइडेड अ सेफ्टी वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ अ कांग्रेस. तो कांग्रेस पार्टी का इनके हिसाब से क्या काम था, दे रेज सम इश्यूज और थोड़ा बहुत जो डिससेटिस्फैक्शन है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, दे विल कीप हाईलाइटिंग दैट डिससेटिस्फैक्शन, बट इट वुड प्रिवेंट द इंटायर कंट्री फ्रॉम बर्स्टिंग इन प्रोटेस्ट. ठीक है, ये उन लोगों का होप था. हाउएवर कांग्रेस मेंबर्स जो थे ना खुद, उनका क्या था एम, दे वर थिंकिंग ऑफ यूजिंग द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ लाइटनिंग कंडक्टर. तो लाइटनिंग कंडक्टर का क्या काम है, बेसिकली एम्स टू, ये जो भी आता है लाइटनिंग आता है उसको डायरेक्ट करके डायरेक्ट सेट इनटू द ग्राउंड. देयरफॉर इस लाइटनिंग कंडक्टर जैसे यूज़ करने का मतलब ये था कि जो बहुत सारा अनरेस्ट है कंट्री में, the liberals wanted to use the congress as a lightning conductor. मतलब इसको डायरेक्ट करके they wanted to properly direct it in order to ensure maximum effect. ठीक है, इस पूरे जो अनरेस्ट को डायरेक्ट करके they wanted to ensure best possible outcome for the Indians. ठीक है, तो ये इसका मतलब है. दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय बिपिन चंद्र. नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2018 का है. Who among the following described the nationalist movements before the arrival of Mohandas Karamchand Gandhi as a movement representing the classes? अच्छा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, वही रविंद्र कुमार है इनका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following was not a feature of the Government of India Act of 1919? तो बाईकैमरल लेजिस्लेशन था, हमें देखो नॉट अ फीचर बताना है. तो bicameral legislature was a feature, then legislative assembly was also a feature, legislative council enabled to move resolution, this was not a feature of the Government of India Act of 1919. Communal representation extended to seats, this was also a feature of 1919 का act. ठीक है. So that is all for this video. Thank you. Please like, share and subscribe to our YouTube channel if you found this video helpful. You can also follow our Telegram channel for any updates, and please comment on the videos regarding any content suggestions which you may have. Okay? Thank you.